जब से छोटी थी तब से पापा यही बोलते थे, ही वॉज अ प्रोफेसर हिमसेल्फ इन अ कॉलेज, सो ही यूज्ड टू सी कि मेरे पास स्टूडेंट तो आता नहीं है, कॉपी आती है। आप भी यही सोचिए कि आप तो जा नहीं रहे, आपकी कॉपी जा रही है। Writing the mains examination. After you clear the prelims examination, prelims से तो screening test है, टिक लगा दिया, हो गया. But when we give the mains examination, our copy goes there. We have to write long answers there. And science is a very vast subject, and only science options are there. So revision becomes very difficult the day before the exams. नोट्स मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे मेंस का आपका जो भी ऑप्शनल है, नोट्स मेकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर बन जाता है. एंड आंसर कैसे लिखें, हाउ टू राइट द आंसर, सैम्पल आंसर्स देखना चाहते हैं कई लोग. तो आंसर्स के लिए जब से छोटी थी तब से पापा यही बोलते थे, ही वॉज अ प्रोफेसर हिमसेल्फ इन अ कॉलेज, सो ही यूज्ड टू सी कि मेरे पास स्टूडेंट तो आता नहीं है, कॉपी आती है. आप भी यही सोचिए कि आप तो जा नहीं रहे, आपकी कॉपी जा रही है. So the easier you will make the task of your examiner, more pleased he will be and more reward he will give you as good marks. अब easier कैसे बनाना है, तो बुलेट पॉइंट्स में लिखना, फेयर हैंड राइटिंग, एकदम सुंदर हैंड राइटिंग की जरूरत नहीं है, बट हाँ पढ़ने लायक होनी चाहिए आपकी हैंड राइटिंग. यू कैन यूज डिफरेंट डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, इवन कलर डायग्राम्स. आई लाइक ड्राइंग, सो आई यूज टू मेक कलर डायग्राम्स. सो जितना कुछ भी आप सिंपल, शॉर्ट, क्रिस्प, क्लियर, जितने अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाएंगे. ज़्यादा लिखने से अच्छा है कि आप कम लिखें, बट ऐसा लिखें कि एग्जामिनर को आपकी कॉपी जो है वो चेक करने में 1 घंटे की जगह आधे घंटे में हो जाए, 4 घंटे ना लगे. मार्क्स गेन करने का सिंपल सा यही तरीका. आप नहीं जा रहे, आपकी कॉपी जा रही है वहाँ पे. मतलब दिस वॉज द मंत्र ऑफ माई फादर. Then comes the interview. Interview is a typical UPSC interview. आपकी वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी टेस्ट की जाती है, बिकॉज एनी ब्यूरोक्रेट ही हैज टू डील विथ अ लॉट ऑफ पब्लिक डीलिंग. इवन in IFS we have to deal all kind of people in a day, from very influential people of the society to many journalists to even local villagers. So all kind of people come and visit you, and you have to talk to them, understand them, and communicate well with them. So how good is your communication skills is tested. One thing about the medium of the examination, for IFS, English is the only medium. We don't have the option to write the exam in any other language. Same with the interview. However, interview is a little liberal thing, because at the end, interview is all about human interaction. Coming to what happens after the interview. Once interview is done, the final result came, it doesn't ensure the final selection in the exam. One has to go through the medical test and the walking test. In medical test, there are a few basic things which are tested. The proper eyesight is important, no knock knee, no flat foot. Then is BMI is okay, BMI is not okay, then one is giving some time to correct the BMI and come back. No major ailments, because at the end it's a field job. You have to be prepared for the emergency. So one has to be fit, and if one is fit, it's one is eligible to clear the medical test. Regarding the height and other things, you can get all the ideas in the UPSC notification, that what is the height required for girls, because and boy, there are different requirements for both of them. Then there is walking test. Walking test is a unique feature of IFS examination, which is not for the civil services examination. Otherwise, medical test is more or less like the CSE exam. In walking test, in early morning of Delhi, you have to reach the Delhi Zoo. And then in 4 hours, the girls are supposed to walk for 14 kilometers at a time, and boys are supposed to cover 25 kilometers in 4 hours. You are given 4 hours. So talking for boys, your average speed has to be around 7 to 8 kilometers per hour, and for girls it has to be 3 to 4 kilometers per hour.
It's a very beautiful place. Means even if you have never walked earlier, you can walk that day, because the place itself motivate you walking among the nature in early morning. However, it is advisable to start walking. If your name is in the final list, start walking 2, 4, 5, because we all are lazy during the exam time.